Assalamu alaikum students, hope you would be fine. And this is your teacher Nazia who's teaching you English. So today we have to start with your first English prose, which is in your English text, which is the English prose. 20 minutes with Mrs. Okentham. It is your first lesson. First of all, you must know that who wrote that drama by Frank Arthur. Now I would like to tell you about author Frank Arthur. He was a civil servant, novelist and playwright and was born in London in 1902. Pseudonym of Arthur Frank Abbott. He was a novelist and historian. He served as an accountant in Fiji and New Zealand. Before returning to England as a civil servant, his first publication was Who Killed Netta Mole, later published by Penguin Books as The Sava Harbour Mystery. His plays include Times, A Thief, French, and She Wouldn't Dance. Last but not the least, 20 Minutes with Mrs. Okentham is an effective little piece of melodrama, notable for its skillful manipulation of suspense. Actually, in this drama, it was full of, suspense, and is a melodrama. Melodrama means there is a tragedy and plus full of suspense is known as a melodrama. Characters. In the 20 Minutes with Mrs. Okentham, the characters are she, Mrs. Okentham, the porter, he unknown, the person also over there. And the scene was picturized in a railway waiting room. And the time was stormy winter evening. And the place, the waiting room of a small country, railway junction, a gas fire at a side wall, a gas light above, a chair beside the fire, a bench against the black wall, and a table. Actually, the place it is telling you the situation of the waiting room area, what was inside the waiting room area. ठीक है, वेटिंग रूम एरिया में क्या क्या था उन्होंने प्लेस में बताया है कि वहाँ पे गैस फायर था, साइड वॉल में गैस लाइट थी, चेयर थे बिसाइड द फायर, ओके, बेंच अगेंस्ट द बैक वॉल एंड द टेबल. वहाँ पे बेंच भी पड़ा था और एक टेबल भी था. नाउ द स्टोरी स्टार्टेड इन दिस वे. At the time of evening, the lady was entered in the waiting room of railway station. एक लेडी आती हैं, वो वेटिंग रूम एरिया में एंटर होती हैं. एंड शी हैड ऑल्सो सूटकेस विद हर नेम्स लेबल ऑन इट. उनके पास एक सूटकेस होता है जिस पे लेबल लगा होता है उसके नाम का. एंड वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी बैठा होता है. ठीक है. When they were talking each other, the lady told that man that she lived at Stanthorpe. जब वो आपस में इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, तो लेडी उनको बताती है कि मैं स्टैंथ्रोप में रहती थी. And he asked her if she knew a lady. As a result, when he listened Stanthorpe, he started to ask questions from her that a lady, Mrs. Okentham, might be, that she also living in Stanthorpe. और वो मिसेस ओकेंथम से इंटेरोगेटिंग करता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपने कोई मिसेस ओकेंथम के नाम से कोई लेडी को पता है, वो भी स्टैंथ्रोप में रहती थी. She said she knew her. He told her that he was going to take revenge from her. She got frightened
and hid her name's label on her suitcase. तब उसने बताया कि हाँ मैं उसको जानती हूँ। तो वो आदमी स्टार्ट हो गया कि मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ उस लेडी से जो है अपना हिसाब बराबर करने। लेडी जो है वो मिसेस ओकेंटम खौफजदा हो जाती है, परेशान हो जाती है। शी गॉट कंफ्यूज्ड फॉर टाइम एंड वो जो उनके सूटकेस पर नाम लिखा होता है वो छुपाना स्टार्ट करती हैं। उस पे आफ्टर दे वर लुकिंग ईच अदर, दे वर टॉकिंग ईच अदर एंड दे वर इंटेरोगेटिंग ईच अदर। फिर ड्रामा में एक एन अदर कैरेक्टर आता है पोर्टर, जो बार बार मिसेस ओकेंडम से पूछता है मे बी माइट बी शी वांट्स एनीथिंग बट शी डिड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम हिम एंड शी सेड मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और he was also whistling the songs and whistling in the waiting room area and he was looking both of them, Mrs. Okentum and the person who was also in the waiting room area. फिर वो बार बार आता है, बार बार जाता है। फिर वो जब आखिरकार जाता है फिर वापस नहीं आता। Then the man told that the lady Mrs. Okentum was once drunk and driving her car very fast. उसी पे मिसेस ओकेंटम पहले पूछती हैं कि आप क्यों उससे अपना बदला लेना चाह रहे हैं, क्या मसला है। तो उस पे ही स्टार्टेड टू टेल हिम द स्टोरी दैट मिसेस ओकेंटम एक रात का वक्त होता है और शी वॉज कमिंग फ्रॉम एनी कॉकटेल पार्टी एंड शी वॉज फुल ड्रंक। वो बिल्कुल ही नशे में होती है और अपनी कार ड्राइव करती है बहुत तेज़। And she crushed his wife and daughter to death who were walking along the path. तो उस पे वो बताता है कि वो किसी कॉकटेल पार्टी से आती हैं और जो है वो इतनी गाड़ी फास्ट ड्राइव करती है कि उनको पता नहीं चलता कि वो फुटपाथ पे चढ़ जाती है। वहाँ पे मेरी बेटी और मेरी बीवी को क्रश कर देती है और वो एज अ रिजल्ट वो मर जाते हैं। When she listened all these talking, she got frightened and she was confused और वो परेशान हो जाती हैं। और उन पे वो कहती है कि she said that she had been punished by a court with 18-month imprisonment। उस पे वो बताती है उस बंदे को कि उसको 18 महीने की सज़ा मिली थी, कोर्ट ने उसे 18 महीने की सज़ा मिली थी। बट why you want to get revenge? She got a rigorous punishment। उस पे वो बोलता है he said that this punishment was not enough। वो जो he replied that जो उनको punishment मिली वो काफ़ी नहीं है। therefore he wanted to kill her to do justice। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ख़त्म कर दूँ, मार दूँ और मैं जस्ट इंसाफ करूँ। Soon the man said that he knew that she herself was Mrs. Okentum and he would kill her. After a long discussion, when the man was walking in the waiting room area, as a result वो क्या होता है, जो उसका लेबल लगा हुआ होता है वो जान जाता है कि यही मिसेस ओकेंटम है और वो कहता है कि मैं इसको मारूंगा। She replied that she was always thought about his wife and daughter and felt very sad. She asked him to kill her to save her of her mental pain. जब उसको पता चलता है कि ये बंदा जान गया है कि मैं ही मिसेस ओकेंटम हूँ, तो she made a plan and she got crocodile tears. She was weeping like a crocodile tears and she started that जब से मैंने उस खातून का और बच्ची का मुझसे मर्डर हो गया है तब से मैं बहुत ही अफसरदा फ़ील करती हूँ और आप मुझे मार दो ताकि जो मेरा जहनी दबाव, जहनी सुकून में आ जाऊँ और मैं जो है जो मेरा जहनी मरीज़ा हो गई हूँ और वो ख़त्म हो जाए। After listening all these things, all these travel matters, talkings of Mrs. Okentum,
he got some sympathy in his heart, and he was thinking that might be she had a guilty of doing so, whatever she did to his wife and daughter. Therefore he said that वो बाहर चला जाता है. The man went out showing that he would let her live. ठीक है, तो वो बाहर चला जाता है और वो ये फील और शो करवाता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा और let her live so as to make her suffer more. मैं इसको नहीं मारूंगा और जैसे ये सफ़र कर रही है मेंटली, ये ऐसे ही सफ़र करती रहे और इसी पेन में रहे, और that would be better as I would kill her. जब आदमी बाहर चला जाता है तो she got happy and she jumped up in a joy. जब वो चला जाता है तो वो बहुत खुशी के मारे जंप लगाती है, खुश होती है, and she was going from one place to another. As a result he returned. जब वो वापस आता है तो उसकी कंडीशन देख के, as he saw her in this condition he killed her. जब उसकी कंडीशन देख के वो on the spot he killed her. Actually there was a plan, there was suspense, it was a full suspense drama, and how the both characters were talking with each other, how the entrance of Porter in it, and how the lady was shedding the crocodile tears and she was making fool to the person, and how the person was leaving her so that she could bear the mental pain. आप इसको पूरा पढ़ो, इसको पूरा समझो, and try to make the story like that. And whenever you understand it and read it, you must be enjoy. And as I told you, that is full of suspense drama, and आप इसको hope you understand it. And I would like you to tell you again the summary of this lesson. As I told you, the characters, the settings, the place, the time, and how the lady came in the waiting room area, how they both were talking each other, how she was hiding the label of the suitcase, and how she was happy, how she was shedding a crocodile tears in order to fool the men. ठीक है, ये आप पढ़ो, आप ऐसा ही कोई ड्रामा बनाओ. दैट इज़ योर असाइनमेंट कि ऐसा ही कोई ड्रामा बनाओ एंड मेक योर असाइनमेंट. एक ऐसी स्टोरी बना के आप सबमिट कराओ और इसको समझो, समझ के पढ़ो. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, डू कमेंट मी. I would make you understand again, because it is very much interesting and suspenseful drama. That how the people are, shedding crocodile tears and making fool to others. How the person who's mentally understand it, and there's a full of psychological drama. And आप ऐसा ही कोई ड्रामा बनाओ and make assignment and do submit it on weekly basis. Thank you so much. Hope you understand it, and take care. See you with another lesson. Do hard work, because this is a high time to do studies. And Allah Hafiz. Take care.